morning to all my dear friends. Welcome back to my channel Brainy Knowledge, and today we are going to discuss some of the part of the Indian Constitution, and rest we will discuss in further videos. So let's begin. So friends, now first comes the Constituent Assembly. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन कब हुई? जुलाई 1946 में। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहली मीटिंग कहां और कब हुई? इट वाज ऑन 9 दिसंबर 1946 इन लाइब्रेरी बिल्डिंग ऑफ काउंसिल चैम्बर इन न्यू दिल्ली। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए? वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 11 दिसंबर 1946। Now comes the objective resolution. 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया बाय जवाहरलाल नेहरू एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगेन, और इसी के बाद आगे की प्रोसीडिंग्स चली। ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया? BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने दिनों तक चली? फर्स्ट रीडिंग 4 to 9 नवंबर 1948 तक। कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड, कॉन्स्टिट्यूशन पास कब हुआ? थर्ड रीडिंग में पास हुआ, तीसरी बार पास हुआ 14 to 26 नवंबर 1949 तक चली थी थर्ड रीडिंग। टाइमिंग्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितना टाइम लगा? इट वाज 2 years 11 months and 18 days। डिबेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में डिबेट्स में कितना दिन लगा? टोटल 140 डेज डिबेट्स चली। पास्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब पास किया? 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 22 पार्ट्स, 395 articles and 8 schedules when it was passed. Last meeting of Constituent Assembly, Constituent Assembly की last meeting कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ वेरीफाइड, कब वेरीफाई हुई इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ? इट वाज मई 1949। कंस्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? नेशनल फ्लैग कब अपनाया? ऑन 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947। कंस्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल एंथम, नेशनल एंथम कब अपनाया? ऑन 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अपनाया। टोटल मेंबर्स इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली कितने हैं? 389 मेंबर्स हैं टोटल। टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंबर्स, एसटी मेंबर्स कितने थे? इट वाज 33 ओनली 33 एसटी मेंबर्स वाज देयर। टोटल फीमेल मेंबर्स इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली, फीमेल कितनी थी? 15, देयर वर 15 फीमेल्स। So friends, next we are going to discuss is preamble. Preamble is also known as key to the constitution, संविधान की कुंजी भी कहा जाता है इसे। Now next comes 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. This is the most important amendment, and according to this, addition of socialist, secular and integrity of the nations were added into the preamble of Indian Constitution. The preamble provides justice, freedom and equality, and in this 3 types of justice, which are economic, political and social, 5 types of freedom: opinion, expression, belief, religion and worship, and further 2 types of equality: prestige and opportunity. Now date which is written on the preamble is 26 November 1949 in the month of Margashirsh, Hindi month of Margashirsh, and the day is Shukla Saptami. These all are written on preamble.
Now friends, now comes the foreign sources from where the Constitution of India have taken. First comes United States of America. From USA, we have taken preamble, fundamental rights, supremacy of the Constitution, independent judiciary, president and vice president. Now comes from Britain, we have taken bicameral legislature, parliamentary system of governance and single citizenship. Now comes the Ireland. Directive principles of state policy, DPSPs we have taken from Ireland and electoral system of president. Australia, from Australia we have taken concurrent list, center-state relations, joint session of parliament and division of powers. Now next is Germany. From Germany we have taken emergency provisions. From Canada we have taken federal characteristics and appointment of governor. From South Africa we have taken amendment of constitution and election of members in Rajya Sabha. From Russia we have taken fundamental duties and Japan we have taken rule established by the law. So friends, next comes the schedules in Indian Constitution. So total there are 12 schedules in the Indian Constitution. Let us discuss them one by one. First comes is the first schedule. First schedule में क्या है? List of states and union territories. All the states and union territories are listed in the first schedule. In the second schedule, we have salaries and pensions of different persons, position holding persons such as president, vice president, ministers, cabinet ministers की salaries और pensions given है. In the third schedule, the oath to be taken by different position holding persons कि वो कैसे अपनी शपथ ग्रहण करेंगे. That is written in the third schedule. Now comes to the fourth schedule. We have detail of seats in Rajya Sabha की राज्य सभा में कितनी seats हैं. In the fifth schedule, we have control of different scheduled castes and tribe area. Different SCs और tribes area को control करने के provisions given है in the fifth schedule. Now comes to the sixth schedule में क्या है? Control of scheduled tribes in 4 states: Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Now comes the seventh schedule. We have center-state relations. In this we have 3 lists: union list, state list and concurrent list. Now 8th schedule में क्या है? 22 languages की इंडिया में 22 भाषाएं बोली जाएंगी. That is in 8th schedule. 9th schedule में क्या गिवन है? Methods of acquisition of property by the state. कि state किसी private property को एक्वाइज कर सकता है, उसके मेथड्स गिवन है इन द 9th schedule. 10th schedule में क्या है? प्रोविजन रिगार्डिंग डिफेक्शन, दल बदल विरोधी कानून भी है इसमें. इन द 11th schedule we have village panchayats and in the last 12th schedule we have municipal corporation. These all are government at smaller level, village panchayats and municipal corporation. So friends, now next comes the reorganization of states. कि जो राज्य है हमारे वो reorganize कैसे हुए यूनाइटेड इंडिया में. तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट हुआ धर कमीशन, धर आयोग का गठन हुआ टू चेक वेदर रिओर्गेनाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज पॉसिबल और नॉट. कि जो लैंग्वेज पर रिओर्गेनाइजेशन है वो पॉसिबल है या नहीं है. नेक्स्ट कम्स द जेवीपी कमेटी फॉर्म्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया. Now main incident comes at 15 December 1952 when the Potish Sri Ramulu dies, and in honor of him on 1 October 1953 Andhra Pradesh first state was formed on the basis of language. On the basis of Tamil language Andhra Pradesh was formed. Now next स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन SRC की फॉर्मेशन हुई 1953 में.
इन जुलाई 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और इस एक्ट के अकॉर्डिंग 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म्ड इन इंडिया. On 28 May 1956, addition of Pondicherry Union Territory, Pondicherry केंद्र शासित प्रदेश को इंडिया में मिला लिया गया on 28 May 1956. On 18 दिसंबर 1961 में क्या हुआ, गोवा, दमन और दीव को मिला लिया गया इंडिया में बाय 12th अमेंडमेंट एक्ट, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा. Let's come to the citizenship, नागरिकता. Written in part 2, भाग 2 में है आपके आर्टिकल्स from 5 to 11 as citizenship. The Constitution provides single and uniform citizenship, एकल नागरिकता का प्रावधान है. Now comes the Citizenship Act 1955. According to this, any person born in India after implementation of Constitution, जो भी person after Constitution के implement होने के बाद इंडिया में जन्मा है, he or she will be the citizen of India. Either of whose parents, या तो मदर या फिर फादर was born in the territory of India. Indian citizens have the following rights which foreigners do not possess. ये foreigners को नहीं है. Article 15, 16, 19, 29 and 30. These 5 articles are provided to Indian citizens only. Only citizens are eligible for offices of president, vice president and not the foreigners. Only citizens have the right to vote. Right to vote सिर्फ citizens के पास है, foreigners के पास नहीं. अब citizenship of India खत्म कैसे हो सकती है? Renunciation, termination और deprivation. Renunciation या तो आप एलिजिबल नहीं है. टर्मिनेशन में अगर सिटीजन खुद अपनी सिटीजनशिप को त्यागना चाहे और डेप्रिविएशन में सरकार उससे उसकी सिटीजनशिप वापस ले. Now friends, next comes the parts of the Indian Constitution. So in Indian Constitution we have a total of 22 parts. Let us discuss them all. Part 1 is based on Union and its states, Article 1 to 4. Part 2 is citizenships, Article 5 to 11. Part 3 is fundamental rights, Article 12 to 35. Part 4 is related to directive principles of state policy, Article 36 to 51. And Part 4A is related to fundamental duties, Article 51A. Part 5 the Union, संघ के बारे में है सब कुछ, Article 52 से 51. Part 6 about the states, Article 152 से 237. Part 8 the Union territories from Article 239 से 242. Part 9 we have the panchayats from 243 से 243 तक. Part 9A the municipal corporations, Article 243P to 243Z तक. Part 9B the cooperative societies, Article 243ZH से लेकर Article 243ZT तक. In the Part 10 we have scheduled and tribal areas from Article 244 and 244A. In Part 11 we have relation between Union and states from Article 245 to Article 263. In the Part 12 we have finance, property, contracts and suits from Article 264 से 300A. Part 13. Now comes the Part 13. We have trade and commerce within India. Article 301 to 307. In the Part 14 we have services under Union and states. Union और states क्या services provide कर रहे हैं? From Article 308 से 323 तक. Part 14A tribunals,
Article 323A and Article 323B. Now we have part 15, we have elections from Article 324 to 329. Now comes the part 16, we have certain provisions for certain classes from Article 330 say 342. Part 17, we have official language from Article 343 say 351. And in part 18, we have emergency provisions from Article 353 say 360. In the part 19, we have miscellaneous some different articles from Article 361 to Article 367. In the part 20, we have constitutional amendment, Samvidhanik Sanshodhan, Article 368. Part 21, we have temporary transition and special provisions from Article 368 to 392. And in the last part 22, we have short titles and repeals, Article 393 to 395. So friends, this is all much for this video. Rest part we will discuss in further video.